हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो सीरीज जरा सी केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है जो है हिस्टामाइन का। हिस्टामाइन इज अ केमिकल विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर। वो एक केमिकल मैसेंजर है जो कि हमारे सेल वॉल में लगे हुए रिसेप्टर तक पहुंचता है और सेल के अंदर कोई मैसेज कन्वे करता है। There are four kind of histamine receptors which are known as H1, H2, H3 and H4. Because of histamine, allergy as well as acidity occurs. Acidity और एलर्जी हिस्टामाइन के कारण ही होता है। तो एलर्जी और एसिडिटी की जो दवाई है वो एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स कही जाती है। H2 रिसेप्टर पर अगर कोई हिस्टामाइन जाकर मैसेज कन्वे करे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड विल सिक्रेट HCl inside the stomach, and if the amount of HCl is more than that of the required amount, in that condition acidity will occur. So if we want to cure acidity, then we have to use a drug which should be H2 antagonist, and because of H1, H3 and H4 histamine, allergy will occur. So if you want to cure allergy, then the drug required must be H1, H3 or H4 antagonist. So this is all about histamine, but we have to consider the structure of histamine also. This is the structure of histamine. So let us see. In histamine, it is a hydrocarbon having a cyclic structure as well as a chain of 2 carbons. And we have 3 nitrogen atoms in histamine. Now we know that histamine in nitrogen, there is a lone pair over it and 3 covalent bonds. Each nitrogen is having a lone pair. And if any element is having a lone pair, then it can act as Lewis base. So in that condition, nitrogens in histamine can act as Lewis base. But there is a question. How many nitrogens in histamine can act as Lewis base? सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन सभी नाइट्रोजन हिस्टामाइन में जो प्रेजेंट है वो लुइस बेस की तरह बिहेव नहीं करते। तो कौन कौन से करेंगे और क्यों करेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एकदम फ्री है, सो इट कैन इजीली डोनेट टू अदर स्पीसीज। दैट मीन्स this nitrogen is Lewis base. It can act as Lewis base. So, because it is able to donate its lone pair to other species. Now, if we consider both these nitrogens, then suppose if you consider this lone pair, and here there is a conjugated system. Look, pi, sigma, sigma. यहाँ पर 2 सिग्मा आ गए, लेकिन यहाँ पर पाई, सिग्मा, पाई। और इस तरह से हम लोग अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को गिने पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पर ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते। देयरफॉर दिस लोन पेयर इज फ्री टू बी डोनेटेड। सो ये नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर किसी को डोनेट करने में सक्षम है। देयरफॉर दिस नाइट्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस। बट इफ यू कंसिडर दिस लोन पेयर, नाउ लुक अगेन, pi, sigma, lone pair sigma. So if we include this lone pair in conjugated system, then we can have a complete conjugated system. Pi, sigma, lone pair sigma, pi. और conjugated system अगर बने तो structure ज़्यादा stable रहता है. Therefore, to stabilize this structure, this lone pair will participate in resonance. And as it is a part of conjugated system, then this nitrogen is not able to donate its pair to other species. Therefore, this nitrogen is not acting as Lewis base. So, in the structure of histamine, though there are 3 nitrogens, but all 3 nitrogens are not Lewis base. Only 2 nitrogens can act as Lewis base, while this nitrogen, in spite of having a lone pair,
it is not able to act as Lewis base because its lone pair is a part of the conjugated system. तो ये हमें याद रखना है हिस्टामाइन का काम क्या है, हिस्टामाइन से क्या होता है और हिस्टामाइन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजन लुईस बेस है और कौन कौन से नहीं है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लुईस बेस है, 1 नाइट्रोजन लुईस बेस की तरफ दी है।